हे दोस्तों, Urdu.PK में आप सब लोगों को एक मरतबा फिर वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर खान और आप लोग देख रहे हैं Urdu.PK यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम ड्रोन को उड़ाने जा रहे हैं रिमोट कंट्रोल से, इस Eachine E58 को। इससे पहले मैंने इसकी कंप्लीट डिटेल अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर वो भी इसकी डिटेल रिव्यू भी देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है रिव्यू के अंदर मुझसे रह गया था रिमोट कंट्रोल से फ्लाइट। इससे पिछली वीडियो में हमने मोबाइल कंट्रोल से इसकी फ़्लाइट की थी और इस वीडियो में हम इसके रिमोट कंट्रोल से इसकी फ़्लाइट करेंगे और प्लस आखिर में मैं आपको इस ड्रोन के कैमरे की फुटेजेस और ड्रोन के कैमरे की पिक्चर्स भी आपको लास्ट की इस वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पे अब मैंने इसको बिल्कुल स्टार्ट कर लिया और यस, अब जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रोन हवा के अंदर है, काफ़ी ज़बरदस्त है। इतनी तेज़ विंड्स के अंदर भी ये काफ़ी स्टेबल इसकी फ़्लाइट है। ड्रोन जो है बहुत ज़्यादा एजाइल और फास्ट है यहाँ पर। यहाँ पर जो मुझे डिफरेंस देखने को नज़र आ रहा है वाईफाई के साथ, जब हम इसको मोबाइल फ़ोन के साथ कंट्रोल कर रहे थे और अभी रिमोट कंट्रोल के साथ कंट्रोल कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन के साथ इसका रिस्पांस ज़्यादा था। यहाँ पर रिमोट कंट्रोल के साथ ये थोड़ा बहुत लैग कर रहा है। थोड़ा बहुत रिस्पांस के अंदर फ़र्क आ रहा है, लेकिन मोबाइल फ़ोन के साथ इसके सिग्नल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव था। Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like